Hello and welcome, guys. In these lectures, we are going to start our Java programming language. These lectures are actually built for the beginners, and the content of this Java programming language is actually started from the beginners, and we will take care of each and every bit which comes under the syllabus of Java programming language. Basically, these lectures are made up on keeping in mind while keeping in mind the syllabus of the bachelors of computer applications uh, professional course. So basically these lectures are mainly focused on those students which are currently enrolled into the batch of B.C.A. All right. Basically, not only those topics are covered in these lectures, those topics are surely covered, but apart from it, additional topics are also covered in these lectures, which include like just like socket programming. We can build a messenger with the help of Java programming language, as well as we can make a dynamic uh, we can make a dynamic web page with the help of this Java programming language. So I keep on saying the word programming language. So we will going to start. Firstly, I wanted to discuss about the contents which we are going to discuss in this session, because this is the first session of our class. So we will not going to discuss a lot more things. That's why, because we are covering mm, all those students, we are covering all those students from beginners to advanced to intermediate also. All right. In the current session we are going to discuss these topics. So as I have said that these topics are also can these lectures can also be taken by any beginners who have no programming language experience in C or in C++. So we will be start from the very basics. All right, guys. So let's discuss. Let me give you the overview of what topics we are going to discuss in this lecture. So our first topic will be what is the programming language, because we keep on hearing that Java is a programming language. Java can do various great things, and there is actually uh, some actually different phases different phases of development of a particular system in Java programming language. So there are basically some steps which we have to follow in order to build a particular program. So there are actually very some easy steps which we have to follow, the just 2 to 3 steps which we have to follow in order to build our first Java programming application program. So what we are going to discuss. So what we are going to discuss that what is a programming language, what are the types of translators. Don't worry if you don't get it. Third topic is why Java, because it is actually the main question around everything. If we study a particular thing, so we should know that why I am studying it, what kind of profit I will get if I study that particular thing. So that's why I've included this topic with that. Why should we study Java? Why should I learn Java? What kind of projects I can build on Java? So we will discuss all of those things into current lecture or in the upcoming lecture. So next topic will be JDK, JRE, and JVM. How to set path and what are the various environment variables. What is the meaning of environment variables? And next topic will be what is a text editor in our computer. What is the difference between IDE and text editor? We are going to discuss in future and current lecture. Uh, and at last, we are going to build a little Java program, so that all of you guys uh, can be able to get a particular idea that how can we make a particular Java program, and how to run a particular Java program. All right. So we will be discussing all these things in future. All right. So let's start, guys. All right, guys. So our first topic will be that what is a programming language. So before going to the actual definition of the programming language, First, I would like to discuss about what is a particular language. What is a language, right?
So if I got an idea what is a particular language, so it will be very easy to know what is the meaning of programming language. So basically programming language is nothing, basically any language. What is the work of a particular language? Because I'm speaking in English, so it is a particular kind of, it is a basically kind of intermediator intermediator between two persons, or we can say that this is actually the way used as a way of communication, as a way of communication as a way we can use this particular language as a way of communication between two persons, or we can say that between two or more persons. So what is actually the work of a particular language? So a particular language is basically works as an intermediator between two persons, or we can say that it is used as a way of communication. A way of communication means, so with the help of a language, with the help of a language I can express I can express my thoughts. I can express my thoughts to another. I can express my thoughts to another person. All right. So interact, in order to make an interaction between two person, in order to do an interaction between two person, we will be using a particular intermediator. Because if suppose if this particular person knows only one language called Hindi, and this particular person knows only one language called English, so there must be a translator between them, right? Because with the all the words said by this particular person who knows only English can't be understood by the person who knows only Hindi. So there is basically a particular translator. So what is the work of a translator? We will be going to discuss in some few minutes. All right. So before understanding about a translator, before going to that particular topic, first we have to understand what is the work of a particular language, right? So a language basically works as an intermediator between the two language. If one person has to communicate with this person, if one person has to communicate with this person, so he has to speak in a particular language, he has to speak something, right? And what he will speak, he will follow some set of rules and regulations, or we can say that he will express his thoughts to this person who also knows Hindi. Person A knows Hindi and person B knows Hindi. All right, so person A knows Hindi and person B knows Hindi, so he will only speak in Hindi in order to communicate his thought to be. All right, so what we can say that, the language is what? Language is just a medium of interaction. We can say that it is just a medium of exchange of thoughts. All right, so we can now conclude what is a particular language. It works basically it works as an intermediator between two person, right? So let's move to our programming language. As we have discussed that it works as a medium of it works as an intermediator between two persons, right? It works as an intermediator between two persons. If two persons wants to exchange their thoughts, so they have to use a particular language, right? So basically what is programming language? So as I'm saying that it between two persons, right? A simple language like Hindi can be able to do interaction between two persons. But here what we will do, with the help of programming language, we will interact not with a person. With the help of programming language, we will be interacting with our computer, right? So computer, as I have said, that it works as an intermediator between two persons. So computer, if I want to do something, I have to do instructions. I have to tell computer, right, what you should do. So how can I tell the computer? So there must be a language between me and between a computer which we both can understand, right? So that particular language will be known as the programming language. Because programming, with the help of programming language, I can express my thoughts
to computer, and computer will give me an output basically. Also, right, computer can give me output. It can be in the form of text, it can be in the form of a video, it can be in the form of audio, etc. All right, so what is the meaning of a programming language? Programming language basically a medium of, it is a medium of exchange of thoughts between a user and a computer. All right, so programming language basically used to interact with the computer. Now we were saying that Java is a programming language, right? Programming language. Java is a programming language. It means we have here what we will use is just like that. There are multiple languages, just like there is various types of languages in India. We speak here Hindi, we speak here English, we speak here uh, uh, different languages, right? So also in the technical world, we have different kinds of programming languages which can be used to interact with the computer, right? So what we will be going to study in this course, we will be going to study one of them, right? One of them, which is Java, or in the upcoming lecture we will start making tutorials for Python as well. So just we will start from Java. So what is Java? Java is just a programming language which is basically used to interact with a computer, or we can say that which is basically used to give instructions to a computer so that my computer can give output to me. All right. So as I have said that we will be discussing these topics. So I have covered what is programming language. Now our next topic, next topic will be types of translator. So first, before moving to the types of translator, first I will move like what is translators and what is the needs. What is the need of translator, right? What is the need of translator? So for example, just let me remove this one so that you will get a proper idea. So what is the meaning of translator? For example, just consider a case where we have two persons. One is person number A, one is person number B. All right, so person number A and person B. Now just consider a case that person A just knows Hindi. All right, he only knows Hindi, he does not know any other language, and person B only knows English. All right, you can take any example, right? So person A knows only Hindi and person B knows only English. So how can these two persons can be able to communicate with each other? We basically need a particular translator who knows both the languages, right? Who knows both the languages in practical world, if I say. So we can say that this is a translator between them. So how they will interact with each other? Person A will tell his thoughts to this particular translator, and that translator will convert these thoughts and will tell person B in English, right? So what is the work of a translator? He will take the message from one person, he will take the message, or we can say that he will take the data, the content from person number A, and will convert that particular content in another language, and will, after converting that content in another language, he will transfer that converted content to person B who knows the another language, right? So just this is the work of the translator. What he will do, he will just take input from a person, convert it to another language, and will transfer that particular thought to person B. All right, so this is the work of translator. Now in the technical world, where is the need of translator, right? So just a second, I will give you a case. Okay, so you guys know a little bit idea about what is the meaning of translator. So let's go to our next topic, which is how there why there is the need of translator if we are interacting with the computer, right? So for example, if there is a person here and he wants to communicate his thoughts to a computer, he wants to communicate his thoughts to a computer.
So computer cannot be able to understand any his languages, right? Computer can't understand Hindi, computer can't understand English. What computer understand? There is a language called machine language. There is a language called machine language, and which is in the form of 0 and 1, which is in the form of 0 and 1. All right. So how we will how these two guys will interact with each other. This is the computer just knows a particular language, which is a machine language, right? Or machine language is in the form of 0 and 1, whereas this person knows only Hindi, or we can say that this person knows only a particular language, right? So what he will do, as we have discussed in previous example, there is a need of translator between these two. There is a need of translator between these two. So what he will do, the person translate, this person give his thoughts to this translator, this person give his thoughts to this translator, and what this translator do, this translator will convert, all the instructions given by the user into the machine language. And then after converting the thoughts, or after converting the instructions into machine language, this translator will pass out those instructions to the computer. And because computer knows the machine language, he will understand it. So there is the need of translator comes between them, because the user cannot be able to understand the language which is in the form of zeros and ones. All right, because it is actually a very complex task to understand each and everything in the form of 0 and 1. All right, so is a language there is a language which is very easier to understand, which we call as programming language. So Java, we are saying in our case, so Java is actually very easy to understand by this person. So he learns Java, and what he will do, he will just write instructions in a file, and he will give that file to that particular translator. And what translator will do, translator will convert all the data into that file and will transfer the converted data to this computer, so that that computer can work upon it. All right, so that this computer can work upon it. So this is all about some logical view of what is translators. All right, so basically there are different types of translator. Now you guys understand what is translators, and what is the basically need of translator, right? So basically we are having multiple types of translator. We have compiler, we have interpreter, and we have assembler. So these three basically are the translators. We can say that these three are basically the three persons. These three are the persons who works as a translator, and what they all will do, they all will convert the programming language into machine language. You got this right? Machine language is that particular language which is only understandable by the machine, which is in the form of 0 and 1, whereas programming language is particular form which can be understandable by the user. All right, so programming language will be converted into machine language with the help of these three persons. So these three persons will convert the programming language into machine language, so that the computer can understand our language, so that the computer can get our thoughts. So there is basically three types of translators available in our system. So in our system. So what is the meaning of compiler? As we have discussed, that it will translate the instructions. It will translate the instruction from a programming language to machine language, right? To a machine language. Just a minute. To a machine language. All right. So as we are saying, that these three basically are the compilers. So there is a common task between all these translator, that they will translate just it will translate a language called assembly language.
assembly language to machine language, and now we will going to discuss one by one. So there is a particular difference between the compiler and interpreter and assembler. So what is the difference between them? The compiler, if we are using a compiler as a translator in our programming language, so what will compiler do? Compiler will take whole file as an input. Okay, so compiler will take whole file as an input, or we can say that compiler एक ही बार में पूरी फाइल इनपुट ले लेगा और उस फाइल के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको साइमल्टेनियसली, उन सबको एक ही बार में कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। एंड देन अगर मेरे पास में मैंने कुछ लिखने में गलती कर दी है, अगर मैं जो बताना चाह रहा हूँ कंप्यूटर को वो मैं कुछ गलत तरीके से बताना चाह रहा हूँ, तो इफ देयर इज सम मिस्टेक इन माय सिंटैक्स, सो दैट कंपाइलर विल टेल मी कि आप गलत बता रहे हैं, आपको वापस से अपना प्रॉपर आपने जो सेंटेंस बोला है वो आपका सेंटेंस गलत है, उसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता, आपको अपना सेंटेंस वापस से लुक आउट करना होगा, वी विल एंड देन आई विल ट्रांसलेट दैट particular sentence so that machine can understand, right? So compiler here towards sentence will be a particular instruction. So what compiler do? Compiler will take a particular file. Just take the example of this notepad only. So what compiler will do? Compiler will convert all these lines at one chance only. Compiler will convert all these lines at one chance only, and will convert all these lines into the form of machine language, right? If as I have said that programming language, so it is not a programming language. I have written here English. So what compiler do? Compiler will convert all the instructions written in a particular programming language to a machine language at once and at a whole means what एक फाइल के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे एक साथ ही कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, राइट? और इफ देयर अगर हमने कोई भी गलती करी है, इफ देयर आर एनी मिस्टेक्स, सो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर सारे सारे इंस्ट्रक्शंस को चेक करेगा और जितने भी जिस लाइंस के अंदर मैंने मिस्टेक्स करी थी उन लाइंस को वो हाईलाइट करके मुझे बता देगा कि आपने इन लाइंस के अंदर मिस्टेक्स करी है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा? इंटरप्रेटर विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन, ठीक है? वो क्या करेगा? इंटरप्रेटर क्या करेगा? वो मेरी फाइल के अंदर एक एक करके, जैसे फर्स्ट इंटरप्रेटर ने ये वाली लाइन कन्वर्ट करी, उसके बाद में इंटरप्रेटर ने ये वाली लाइन कन्वर्ट करी, इसके बाद में इंटरप्रेटर ने ये वाली लाइन कन्वर्ट करी, तो कंपाइलर क्या कर रहा था? कंपाइलर ने पूरी लाइन से एक बार में कन्वर्ट कर दी थी, मगर इंटरप्रेटर क्या कर रहा था? वो एक एक करके कन्वर्ट कर रहा था। ओके, एक एक करके कन्वर्ट कर रहा था। और कंपाइलर के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि कंपाइलर सारी लाइंस को कन्वर्ट करने के बाद में जितने भी मैंने मिस्टेक्स करी है वो सारी मिस्टेक्स वो एक साथ हाईलाइट करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तक कन्वर्ट करने के बाद में मैंने इंटरेक्ट की स्पेलिंग गलत कर दी, तो इंटरेक्ट की वो यहीं पर ही रुक जाएगा। वो बोलेगा इंटरप्रेटर कि आपको सबसे पहले इस लाइन के अंदर जो भी मिस्टेक करी है वो आपको ठीक करनी पड़ेगी। जब तक आप ठीक नहीं करोगे जब तक मैं आगे कन्वर्ट करना रोक दूंगा, जब तक मैं आगे कन्वर्ट नहीं करूंगा बेसिकली। ऑलराइट, तो जैसे ही मैं इंटरेक्ट की स्पेलिंग और इंटरेक्ट में जो मैंने मिस्टेक करी थी जैसे मैं उसको ठीक कर दूंगा, देन इंटरप्रेटर विल मूव फॉरवर्ड टू कन्वर्ट ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस। ऑलराइट, तो देयर इज अ डिफरेंस। कंपाइलर क्या कर रहा था? पूरे इंस्ट्रक्शंस को एक बार में कन्वर्ट कर रहा था और सारे के सारे मेरे एरर्स दिखा रहा था, एरर्स जो मैंने मिस्टेक्स करी है बेसिकली। और इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन मेरे कोड को कन्वर्ट कर रहा है, और इफ देयर इज एनी मिस्टेक्स in a particular line, he will tell that mistakes to me. He will tell that particular mistake, वो मिस्टेक को एक एक बार बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके फाइल के अंदर एक एरर आपके फर्स्ट सेकंड लाइन में है, देन दूसरी एरर आपके थर्ड लाइन में है, दूसरे थर्ड एरर आपके फोर्थ लाइन में है, तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर सारे कोड को स्कैन करने के बाद में तीनों की तीनों एरर्स मेरे को एक बार में दिखा देगा। बट इंटरप्रेटर क्या करेगा? वो फर्स्ट लाइन कन्वर्ट करेगा, देयर इज नॉट एनी एरर। सेकंड लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको एक एरर दिख जाएगी और वो वहीं रुक जाएगा। जब तक हम इस एरर को ठीक नहीं करेंगे वो आगे नहीं बताएगा कि हमारे प्रोग्राम में आगे कितनी एरर्स हैं। जैसे आपने इसको ठीक करी, फिर वो थर्ड लाइन में आएगा, थर्ड लाइन में उसको पता लगेगा कि एक और एरर है,
फिर जब तक आप थर्ड लाइन वाली एरर को ठीक नहीं करोगे जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा. ऑलराइट, सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन these two persons. ओके, सो मैंने यहाँ पर एक चेंज करा था असेंबलर के अंदर. असेंबलर क्या करेगा, बेसिकली असेंबलर मेरी एक और लैंग्वेज होती है जिसको मैं बोलता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थोड़ा नीचे लो लेवल लैंग्वेज. तो बेसिकली वी हैव मशीन लेवल लैंग्वेज जो सिर्फ और सिर्फ मशीन ही समझेगी. हमारे पास में एक और लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज से थोड़ा ऊपर होती है. लाइक थोड़ा सा यूजर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है. ओके, बट इट इज नॉट ए प्रॉपर मशीन लैंग्वेज. तो देर आर बेसिकली सम सिंबल्स वी यूज इन असेंबली लैंग्वेज. दो सिंबल्स आर नोन एज mnemonics. All right, so those symbols which we are using in assembly language, that symbols are known as mnemonics. So assembler क्या करेगा, वो सारे instructions जो मैंने assembly language में लिखे हुए हैं और उन सारे symbols को वो machine language में convert कर देगा. तो basically assembly language का अगर मैं example लूँ तो assembly language में वो instructions आते हैं जिसके अंदर कुछ मेरे पास में symbols होते हैं और कुछ मेरे पास में 0 और 1 के फॉर्मेट होता है. These are the translators basically जो क्या करेंगे, मेरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली जो यूजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहा है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उस यूजर ने उन इंस्ट्रक्शंस को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. मशीन लैंग्वेज जैसे कि हमने डिस्कस करा कि मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ओनली कंप्यूटर ही समझ सकता है. और इसका फॉर्म क्या होता है, 0 और 1. जबकि जावा के अंदर हम बहुत सारे इंग्लिश के फीचर्स भी इंग्लिश के टर्म्स भी यूज में लेते हैं जिनको इंग्लिश के कीवर्ड्स में बोलो तो इंग्लिश के कुछ कीवर्ड्स भी हम यूज में लेते हैं. कीवर्ड मतलब कि जस्ट simple words. All right, so I hope you have got these translator. What is the meaning of a translator? तो अब हम चलते हैं next topic पर हमारे why Java. Right, so it is basically the most important questions, one of the most important questions. So why Java, why should I study Java, and why will I consume Java, why will I use my time to read Java? All right, so we will going to study this topic. So here we are going to discuss about the features of Java. All right, so let's move to our first feature. First feature says that Java is a very simple language. How Java is a very simple language? Because Java uses various words from English, so it is very easily understandable. It is very easily understandable that what Java is trying to say to us. All right, because various, let me write here, various words in Java language is taken from English. तो क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हमने इंग्लिश डिक्शनरी से लिए हैं, that's why it is very simple. Alright, so चलते हैं second feature पर, which is which kind of translator is used by the Java. So Java is the compiled interpreted language. So as we have discussed so far that what is the meaning of the compiler and what is the meaning of the interpreter. So Java is basically compiled interpreted language, means Java uses compiler as well as interpreter. Now how Java uses compiler and interpreter we will be discussing that particular part in our next topic. All right, so next feature and very important feature is Java is object oriented programming language. Yes guys, so we were discussing about some features of Java programming language. So we have discussed that how Java is very simple. Java is compiled interpreted language. It means that Java uses both of these translator, compiler and interpreter, which we have discussed in our last topic, that what is compiler and what is interpreter. All right, so Java is compiled interpreted language. So we will discuss how Java is compiled interpreted language in the next part. So let me move to our next feature, which is object oriented programming language. So object oriented programming language means if I compare Java with C or C++, if I compare Java with C or C++, so
let me compare it with C firstly, because C actually follows an approach. C actually follows an approach called structured approach of develop structure approach of structured approach of development, basically. Structured approach of development. C follows this approach. तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में हमारा क्या होता था, मेन सीन हमारा मेन जो मोटिव था सी लैंग्वेज के अंदर वो ये था कि हाउ आई शुड राइट माई कोड, वेरी ब्यूटिफुली और वेरी इफेक्टिवली। ऑलराइट, तो सी के अंदर मेरा मेन मोटिव ये था, वेयर सी के अंदर मेरे पास में बहुत सारे लूप होल्स थे जिसके थ्रू जिसकी वजह से हमारा जो मेन फोकस था वो डेटा के ऊपर नहीं जाता था। तो जावा ने हमारे को क्या दिया है, एक वेयर सी प्लस प्लस ने भी वो फीचर दिया है, वो फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस। सो बेसिकली जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पर हमारा जो मेन मोटिव है जावा के अंदर, हमारा जो मेन मोटिव है वो होगा यहाँ पर मेन मोटिव है डेटा के ऊपर। बेसिकली मेन मोटिव है डेटा के ऊपर, दैट डेटा सिक्योरिटी, वी कैन से दैट डेटा सिक्योरिटी। वो डेटा सिक्योरिटी हम किस तरीके से अचीव करते हैं, वो हमारे पास में कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के। हमारे पास में बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे लेट मी कंक्लूड दैट कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, राइट। इंस्टेंस मतलब कि कोई भी एक चीज जो आपके सामने दिख रही है, जैसे कि आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका चार्जर। सो दीज आर बेसिकली द ऑब्जेक्ट्स। नाउ इफ आई these are the known as objects। so java के अंदर भी हम basically objects बनाएंगे एंड हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ डेटा हम स्टोर करवाएंगे, राइट। सो कुछ बेसिकली मैंने बोला कि डेटा सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं, तो मेरे पास में बहुत सारे फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के, जिनके अभी मैं सिर्फ नेम्स लूंगा, बिकॉज अगर मैं उसको अभी फिलहाल के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा तो वो फिर हम आने वाले टाइम में नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बिकॉज देयर इज बेसिकली a dedicated class, a proper dedicated class that what are those features meaning। तो अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँ तो फर्स्ट फीचर इज द एब्स्ट्रैक्शन फीचर। ऑलराइट, फर्स्ट फीचर says abstraction must be there। what is the meaning of abstraction, we will be discussing, right। and those guys who have studied C++, those guys has a little bit idea about what is abstraction। now we have another concept called encapsulation। there is nothing to worry about if you don't know about these concepts, we will be discussing these concepts in our upcoming classes, right। we have another concept called inheritance, and the last one is polymorphism। so these are basically the features of an object oriented programming approach। so in object oriented programming approach we mainly focuses on the data security, all right। whereas in structured approach of developing a particular program, we follows how I should write my code very effectively, or we can say that how I should write my code in a very structured manner। Now our fourth feature is robust language। How Java is a robust language। robust का meaning basically काफी कम लोगों को पता होता है students को। so let me explain that what is the meaning of robust। so robust मतलब कि ये है कि Java के अंदर basically हमारे पास में further दो features हैं। हमने दो फीचर्स में इसको डिवाइड करा है, फर्स्ट इज गार्बेज कलेक्शन एंड द सेकंड वन इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सबसे पहले मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझाना चाहूंगा कि एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है। कोई भी मेरे प्रोग्राम में जो एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है मैं उसको एक्सेप्शन बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन का अगर हम लें तो आपका प्रोग्राम आपसे आपका नाम मांग रहा था, लेकिन आपने उसके अंदर आपका प्रोग्राम बेसिकली आपसे एज एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको उस फील्ड के अंदर, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपको अपना नेम डालना है, मगर आपने उसके अंदर आपका रोल नंबर डाल दिया बेसिकली। तो इस फील्ड में आपको अपना नेम डालना था, आपने क्या करा, आपने इसमें रोल नंबर डाल दिया और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो एक एक्सेप्शन क्रिएट कर देगा। एक्सेप्शन मतलब कि
आपने कुछ ऐसा इनपुट दे दिया जो कि मेरा प्रोग्राम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो उस वो जो कंडीशन ऑब्टेन होगी उस कंडीशन को मैं बोलूंगा एक्सेप्शन. तो एनी एबनॉर्मल कंडीशन which is created by the user or which is created by the application, that will be known as the exception. So Java मेरे को एक प्रोवाइड करता है फीचर जिसको मैं बोलता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसके थ्रू मेरी जो एबनॉर्मल कंडीशंस है मैं उसको इजीली हैंडल कर पाऊंगा, मैं उसको इजीली टैकल कर पाऊंगा. Further, we will be discussing about this. What is the meaning of exception handling and how I can achieve exception handling in Java, right? And what is the meaning of garbage collection? So, as I have said, that the main focus in object-oriented programming language is on data, right? So there is basically a huge amount of data into our RAM, into our memory basically. So if there is any data which is not in use, basically in simple terms, we will be going to discuss each and every topic in detail because it is the first class, so I am taking the overview only. All right. So because there is a huge amount of data into our RAM, so if there is any data created by the program, created by our Java program, which is not in use. So what, there is a feature of Java garbage collection. So garbage collection is a feature by which we can remove all those data into our RAM so that our memory can be free, or we can use that particular memory in other efficient tasks, right? So this is about the robustness of a language. How Java language is a robust language because there is the existence of Java garbage collection and Java exception handling, right? So our next feature is in Java we have actually various different and wide range of packages. What is packages? Packages just a container. Packages are nothing but these are the container which contains huge amount of code, basically a huge amount of code which has its own features. All right, which has its own features. So जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर को ऐड कराने का कोड इसमें लिखा हुआ है, तो अगर इसमें पहले से लिखा हुआ है तो मेरे को उस 2 नंबर को ऐड कराने के कोड को वापस से लिखने की जरूरत नहीं है. मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट इस पैकेज को यूज में ले लूंगा. ऑलराइट, ताकि मेरा काम बचे, और जिसको मैं बोलता हूँ रीयूजेबिलिटी ऑफ ए कोड. ऑलराइट, so there is basically wide range of packages available in Java programming language. All right. Next topic is case sensitive language. Java is the case sensitive language. So what is the meaning of case? So there is basically two types of cases. One is uppercase. The second one is lowercase. Second one is lowercase. All right. So uppercase basically those letters which are capital in, which are basically capital, just like this. All right, just like this. So these are basically in the uppercase, and all those letters which are small letters, this will be known as the lowercase. So Java is case sensitive language, means each case will be treated differently because each letter of different case will be treated as different, will be treated as different, right? Different thing. So here in Java, if we take the example of H here, lowercase is totally different from the H with uppercase, right? So these two H's are different in Java programming language. Not only H, but this whole hello, the upper, this hello and this hello is totally different from each other, right? So this is about the case sensitiveness of Java programming language. Now if I talk about platform independent, platform का मतलब यहाँ पर है मेरा operating system. Alright, platform का मतलब है मेरा यहाँ पर operating system. Now what is the meaning of operating system? For example, there is my computer system. ये मेरा computer system है. Now अब इस computer system के अंदर मेरे को मेरा प्रोग्राम चलाना है. कौन सा वाला? जावा का. मेरे को मेरा जावा का प्रोग्राम चलाना है. ऑलराइट, तो जावा का प्रोग्राम चलाने के लिए मेरे को बेसिकली इसको एक आत्मा देनी होगी. तो वो जो आत्मा है जो मेरा प्रोग्राम चलाएगी जावा का, उसको मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली नथिंग बट इट वर्क्स एज एन intermediator between the application softwares, and the hardware. For example, मेरे जावा को
मॉनिटर यूज में लेना है, मेरी जावा एप्लीकेशन को मॉनिटर यूज में लेना है, तो जावा किसको बोलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करेगा मेरे हार्डवेयर से, एंड देन हार्डवेयर अगर वो फ्री होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, इस पर्टिकुलर जावा एप्लीकेशन को वो पर्टिकुलर हार्डवेयर अवेलेबल करवा देगा। ऑलराइट, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मेरा मतलब है, प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्या है, मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में ले रहा हूँ, मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में ले रहा हूँ मेरे सिस्टम के अंदर। ऑलराइट, सो अब मेरे पास में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। If I take an example, so we have Windows, basically we have Mac, we have Android as well as, so there are basically we have Linux, which is very great system. So what Java provide features that what you can do, you can just write your Java code, you can just write your Java code into Windows, and after writing your Java code in Windows, you can launch the same code. You can copy that code into pen drive, and if you plug that pen drive into a Linux based system, so that code will work fine in Linux as well. Alright, so this is all about the platform independentness, that uh, this code, my Java application code, is not dependent on Windows, right? It is not dependent on Windows, it is independent from Windows, it is independent from any operating system, OS. So for now, just consider operating system as an uh, intermediator between any application software and or hardware, right? So operating system is basically used to run all the application software. Now in our case, application software is Java application. Alright, तो Java application को run करने के लिए मेरे को एक operating system चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, एज एक प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है। मैं अपने सिस्टम में कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज लूँ, उससे मेरी जावा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चाहे विंडोज यूज में लूँ, मैं चाहे लिनक्स यूज में लूँ, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। मेरा ये जो कोड है, जो मैंने विंडोज पे लिखा था या मैंने जो लिनक्स पे लिखा था, तो अगर मेरा विंडोज पे लिखा गया कोड मैं सेम कॉपी करके लिनक्स पे चलाऊंगा तो इट विल गिव मी द सेम आउटपुट। दैट्स व्हाई it is platform independent language, it is a portable language, as well as the another word is it is architecture neutral. This is about the features of Java. Or last feature is multi-threaded language. Multi-threaded means uh, what you can do, if I tell you that अगर आप अपना लैपटॉप चला रहे हैं तो उसके अंदर बैकएंड के अंदर आप चाह रहे हो कि आप एक गेम भी खेलो। ऑलराइट, तो अगर आप गेम का एग्जांपल लोगे, तो फॉर एग्जांपल आप गेम खेलो GTA वाई सिटी। ऑलराइट, तो GTA वाई सिटी जब आप खेलोगे तो आपको उसके अंदर दिखेगा कि एट द सेम टाइम जब आपका प्लेयर रन कर रहा है रोड के ऊपर, एट द सेम टाइम जब आपका प्लेयर रन कर रहा है रोड के ऊपर, तो उसके अंदर बहुत सारी थ्रेड्स चल रही है, बहुत सारी प्रोसेस चल रही है। फॉर एग्जांपल आपका प्लेयर यहाँ से चल रहा है तो यहाँ से इस वाली रोड से एक कार आ जाएगी अंदर, अपने आप ही आ जाएगी, उसका आपको नहीं पता होगा। ऑलराइट, अचानक से आपके गेम में बारिश आने लग जाएगी, अचानक से आपके पीछे पुलिस भागेगी। ऑलराइट, तो ऑल व्हाट इज ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स, कि वो सारी चीजें जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है अपने गेम के अंदर, जो कि है GTA वाइस सिटी। ऑलराइट, सो वो सारी चीजें, जैसे दूसरी गाड़ियों का आना, वहाँ पे रेड लाइट का रेड हो जाना अपने गेम के अंदर। ऑलराइट, सो ऑल दोस थिंग्स आर नोन एज थ्रेड्स इन पर्टिकुलर गेम। राइट, तो वैसे ही मेरे पास में जावा के अंदर भी हम मल्टीपल थ्रेड्स बना सकते हैं। मल्टीपल थ्रेड्स का मतलब मैं मल्टीपल प्रोसेसेस, जैसे मैंने गेम का एग्जांपल लिया था तो वहां पर मल्टीपल चीजें एक साथ चल रही थी, आपका प्लेयर भी चल रहा था वहां पर, आप वहां पे बारिश भी हो रही थी, वहां पर अलग अलग कार्स भी आ रही थी, वहां पे ट्रैफिक लाइट का कलर भी चेंज हो रहा था, वहां पे अलग अलग प्रोसेसेस एक साथ चल रही थी। राइट, वहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस एक साथ चल रही थी। तो हम क्या कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू सेव और टाइम, हम अपने जावा को भी मल्टी थ्रेडेड बना सकते हैं। मैं अपने जावा के प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस रन कर सकता हूँ, ताकि मेरा जो जावा का प्रोग्राम है वो बहुत इजीली और बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत ही कम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए, बहुत ही कम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए।
ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टी थ्रेडेडनेस कि मैं बहुत सारी एक प्रोग्राम के अंदर मेरा ये मैंने बड़ा वाला बॉक्स बनाया है, आप इसको कंसिडर करिए एक प्रोसेस, बड़ी प्रोसेस, और इस फर्दर प्रोसेस के अंदर मैंने ये सब प्रोसेस बना दिए हैं। तो ये सब प्रोसेस विल बी नोन एज द थ्रेड्स। तो इन अपने जावा के अब हम जावा के प्रोग्राम के अंदर मल्टी थ्रेडेड these multi threads we can use, right, so that मेरा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर टाइम से फिनिश हो जाए उसकी एग्जीक्यूशन। ओके, so this is all about the features of Java. This is all about the features of Java. There are basically different there are basically many more examples, many more features of Java apart from this, so we will discuss those features in our upcoming classes as we will cover our main topics, right? So we have what we have covered. We have discussed that why should we study Java, what are the features of Java, what are types of translator, what is the meaning of a programming language. All right, so let's move to our next topic. Let's move to our next topic, which is JDK, JRE and JVM. तो JDK, JRE and JVM में जस्ट एक अपना डायग्राम ओपन करके बताना चाहूंगा आपको, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये रहा। तो JDK की बेसिकली फुल फॉर्म होती है, JDK की बेसिकली फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने कोई भी जावा के प्रोग्राम को बनाना है, आप चाहते हो कि आप अपना जावा का प्रोग्राम बनाओ, लिख के बनाओ, खुद डेवलप करो, तब मुझे एक जावा डेवलपमेंट किट की जरूरत है। ऑलराइट, ठीक है, तो जावा डेवलपमेंट किट अगर आप इंस्टॉल करना चाहोगे तो बेसिकली जावा ने अपनी ऑनलाइन साइट प्रोवाइड करवाई है। यू कैन जस्ट राइट JDK 13.1, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। आप ओरेकल की साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो, JDK 13, राइट। तो अभी मेरा नेट थोड़ा स्टेबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट वर्किंग फाइन, राइट। सो JDK बेसिकली हम कब यूज में लेंगे, व्हेन आई वांट टू डेवलप ए प्रोग्राम, व्हेन आई वांट टू क्रिएट ए प्रोग्राम, JDK में तब यूज में लूंगा, राइट। सो अगर मैं इस इमेज पे चलूं तो JDK के अंदर हमें क्या क्या मिल रहे हैं। JDK के अंदर हमारे पास में आ रहा है JRE, which is Java Runtime Environment, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा वो सारे टूल्स जो मेरे को एक जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए नेसेसरी है, जैसे कि जावा सी, जावा, ये मेरा एक टूल्स का एग्जांपल है। जावा सी और जावा क्या है वो अभी हम देखते हैं चल के आगे, ठीक है। तो ये कुछ मेरे एक्स्ट्रा टूल्स हैं जो कि एक जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए काम आते हैं। ऑलराइट, अब जैसे कि हमने देखा कि अगर मैं JDK इंस्टॉल करूंगा तो उसके अंदर मेरे पास में जावा रन टाइम एनवायरनमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आएगा। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट किस काम में आता है, बेसिकली जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हमारा, ये जो मैंने जावा डेवलपमेंट किट के थ्रू मैंने अपनी कोड लिखा, मैंने अपना प्रोग्राम बनाया, मैंने अपने कुछ कोड लिखे, उस कोड को रन करवाने के लिए, उस कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, एग्जीक्यूट मतलब कि जस्ट कंप्यूटर को पास करने के लिए, ठीक है, जस्ट मेरे प्रोग्राम जो मैंने लिखा उसको कंप्यूटर को पास करने के लिए मेरे पास में एक फीचर होता है जावा का, जिसको मैं बोलता हूँ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ऑलराइट, तो जस्ट अगर आप फॉर एग्जांपल अपने जावा के प्रोग्राम को बनाना नहीं चाहते, आप आपके पास में ऑलरेडी पड़ा हुआ है जे जावा का प्रोग्राम डॉट जावा फाइल पड़ी हुई है आपके पास ऑलरेडी, तो व्हाट यू कैन डू, यूज you can use JRE, Java Runtime Environment, in order to execute that file, in order to execute that file। अब JRE के अंदर बेसिकली मेरे पास में एक फीचर होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे अपनी आने वाले सेशन में। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो जावा वर्चुअल मशीन के अलावा क्या होता है यहाँ पर, सेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज मतलब कि वो सारी चीज़ें जिस यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास में कुछ कुछ कोड लिखा हुआ है, ऑलरेडी मेरे पास में कुछ कोड लिखा हुआ है, एंड वो जो कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है उस कोड को यूज करने के लिए मैं इन लाइब्रेरीज का यूज करूँ, राइट। तो इन लाइब्रेरीज के अंदर मेरे पास में पहले से कुछ लिखा हुआ कोड जो है वो लिखा हुआ रहता है, पहले से बना हुआ कोड लिखा हुआ रहता है यहाँ पर बेसिकली। तो JDK हम कब यूज में लेंगे, जब मुझे मेरा जावा का प्रोग्राम बनाना होगा,
जब मुझे मेरे जावा का प्रोग्राम बनाना होगा, जब मुझे मेरे जावा के प्रोग्राम को क्रिएट करना होगा, तो इसके अंदर दो टूल्स आएंगे, एक तो जावा और जावा सी। हम अपना जब फर्स्ट जावा का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जेडीके के अंदर मेरे पास में एक तो डेवलपमेंट टूल्स आएगा, एक मेरे पास में आएगा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की बेसिकली क्या चीज है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर मेरे पास में आता है एक तो जावा वर्चुअल मशीन, एक आती है मेरे पास में कुछ फाइल्स जो कि जावा के प्रोग्राम को रन करवाने के लिए काम में आती है ना। और रन करवाने में और क्रिएट करने में डिफरेंस ये है कि एक क्रिएट करोगे आप, जब आप क्रिएट करोगे अपना जावा का प्रोग्राम तो आपको कुछ सेट ऑफ लाइंस लिखनी पड़ेगी, सेट ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड लिखना होगा। ऑलराइट, लेकिन अगर आपके पास में ओनली जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है तो आप क्या करोगे? आपके पास में कोड पहले से लिखा हुआ है, आपके पास में कोड पहले से लिखा हुआ है, आप क्या करोगे? जस्ट इसको जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू इस फाइल को इसके अंदर पास कर दोगे और ये फाइल अपने आप रन करवाएगी। ये फाइल जस्ट मेरे को आउटपुट दे देगी, ये फाइल कन्वर्ट कर देगी मेरे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर को दे देगी। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड जावा डेवलपमेंट किट बेसिकली। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बेसिकली डीपली जा सकता हूँ मैं, तो अभी हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके बाद में हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे। what are the features available in Java virtual machines? All right, so we have basically different class loaders there. We have different native interfaces. We have different kinds of memory area of our Java programming language, right? So we will be discussing all of these things in a separate class of 10 to 15 minutes just, right? So this is all about the Java development kit, Java runtime environment, and Java virtual machine. Java virtual machine basically is responsible for providing memory to my Java program. All right, Java virtual machine is responsible for providing a memory to my program, to my Java program. इसके अंदर मेरे पास में बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, बहुत सारे क्लास लोडर्स अवेलेबल है, बहुत सारे मेमोरी एरियाज अवेलेबल है बेसिकली, राइट? तो मैं जावा वर्चुअल मशीन का यूज करके उन मेमोरी एरियाज को एक्सेस करूंगा एंड देन अपनी जावा की जो एप्लीकेशन है उसको रन करके उसके अंदर उस मेमोरी एरिया का यूज मिलूंगा बेसिकली, राइट? सो अब हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट, हाउ टू सेट पाथ। पाथ मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार बता देता हूँ पाथ मतलब क्या होता है, जस्ट सो सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ। तो अभी जो फिलहाल मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है उसकी लोकेशन है सी यूजर्स देवांश। तो सबसे पहले मुझे cd करके, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, इस कमांड के थ्रू मैं डेस्कटॉप लिखूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं डेस्कटॉप पे स्विच हो चुका हूँ, राइट? अब मेरे को क्या करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा cd, तो cd एक कमांड है, राइट? cd एक कमांड है जिसको पता है कि cd अगर मैं लिखूंगा और cd के बाद में जो भी चीज लिखूंगा वो एक फाइल का नाम होगा, वो एक फाइल का नाम होगा। अगर मैंने लिखा cd माई फाइल्स तो ये माई फाइल्स के अंदर, माई फाइल्स एक फोल्डर है, उस फोल्डर में स्विच हो जाएगा। तो cd एक कमांड है, cd कमांड्स की वजह, cd कमांड की वजह से हो रहा है। अब मैं कुछ ऐसी चीज लिखूं जैसे फॉर एग्जांपल देवांश। देवांश इज नॉट अ कमांड, राइट? देवांश इज नॉट a command, but if I want to use this, if I want to use this currently, not Devansh, but there is a command called Java C, जो कि मैंने इस इमेज के अंदर आपको दिखाया था। कुछ टूल्स होते हैं Java C, तो ये Java C कमांड जब आप फर्स्ट टाइम JDK को इंस्टॉल करोगे उस टाइम पर Java C कमांड यहाँ पर डायरेक्टली नहीं चलेगी। उसके लिए आपको कुछ वेरिएबल्स सेट करने होंगे। तो वेरिएबल्स कैसे सेट करेंगे हम, वो मैं अभी बताता हूँ जल्दी से। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपना दिस पीसी ओपन कर लीजिए। So just a second. All right, so there you go. This PC में मैंने राइट क्लिक कर रहा, and then properties, and then advanced system settings, मैं जाऊँगा environment variables पे, because environment variables basically
एनवायरनमेंट बेसिकली क्या, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बेसिकली क्या करेंगे, ये वेरिएबल्स हमारा पाथ पाथ बताएंगे कि इन वेरिएबल्स के अंदर मैंने जो वैल्यू दी है उन वैल्यूज को चेक करेगा कौन, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। उन वैल्यूज बेसिकली मेरी लोकेशंस हैं यहाँ पर। इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर मेरे को मेरी लोकेशन सेट करनी होगी कि जैसे ही अगर मैं कोई कमांड फायर करूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो वो किन किन लोकेशन पे जाके चेक करेगा। तो आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर उस एक लोकेशन को पेस्ट करना है, तो कौन सी लोकेशन होगी वो अभी हम डिस्कस करते हैं आगे चल के। So environment variables, right? So just click on environment variables. You will see this window. What you have to do, you have to you are just seeing this particular environment variable called path. तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, आपके पास में ये विंडो आ जाएगी। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में एक पाथ कॉपी करके रखना है। कौन सा पाथ होगा वो भी मैं बताता हूँ। आपको सी में जाना है, दिस पीसी में जाने के बाद में सी डायरेक्टरी, then program files, then you will see Java here. Just yeah, program file in 86, you will see Java here, and इसके अंदर आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा, JDK फोल्डर। दिस JDK फोल्डर में आप जाओगे, आपको यहाँ पे बिन फोल्डर दिख रहा होगा। इस बिन फाइल के अंदर आपको ये दिख रही होगी जावा सी डॉट ई एक्स। तो आप क्या चाह रहे हो कि इस जावा सी डॉट ई एक्स को मैं कहीं से भी यूज में ले लूं, तो आपको जस्ट ये वाला पाथ कॉपी करना है और इस पाथ को यहाँ लास्ट में एकदम ऐड कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। बिकॉज मैंने इस पाथ को ऊपर ऊपर ऑलरेडी पेस्ट करा हुआ है, तो आई डोंट हैव टू पेस्ट, राइट। बट अगर आपने इस पाथ के अंदर अपने जावा का एनवायरनमेंट, अपने जावा की लोकेशन सेट नहीं करी है, तो जावा सी कमांड आपकी नहीं चलेगी। All right, so Java C, this is how we can set our environment variable. This is how we can set our path of Java, right? So हमारा next topic है, just a second, guys. So guys, we have discussed these topics in current session. So I guess this is enough for this session, as we will be discussing these four small topics in our next session. So guys, thank you so much for watching this video, and please make sure you watch our next video, because in that video we will be discussing about what is the meaning of JVM in detail, what are the things which is contained by the JVM, like what are the different types of class loaders, what are the different memory areas available in JVM, all right, what is the meaning of native interface, native methods, what is the meaning of native methods. So we will be discussing all those things in our next class, in our next session, and we will be discussing all these things, all these topics in our next session, like what is text editor, what is the difference between IDE and text editor, what is the basic program structure of a Java, how can I run up my first Java program, right? So we will be discussing, or in our next session, will be about around 15 to 20 minutes, where we will be discussing all these remaining topics, right? So thank you so much guys for joining this video. Thank you so much, and if you have further doubts, you can ping me, right? Stay tuned. Thank you so much.